नमस्ते। हम हमारे नए वीडियो के साथ आज हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश हाल ही में न्यूज में रहा क्योंकि वहां पे सरकार एंटी कन्वर्जन एक्ट यानी जिसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 में ये एक्ट पास हुआ था, जबकि तब वहां पे अरुणाचल प्रदेश एज अ स्टेट था ही नहीं। अरुणाचल प्रदेश एज अ स्टेट बना है 87 में, फरवरी 87 में। पर उसके 9 साल पहले ये एक्ट तब लागू ऑलरेडी मतलब पास कर दिया गया था जब वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, और ये कलेक्टिव था। तब अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट था ही नहीं। पर हाल में क्या वजह है कि ये अभी चर्चा में अब आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 40 साल के ऊपर हो गए, 47 ईयर्स हो चुके हैं इस एक्ट को। ऑलरेडी पास्ट एक्ट है, पर क्या वजह है कि अभी ये चर्चा में है। तो हम बता दें कि आपको बताएं कि इसके क्या कारण है। इसके कारण ये है क्योंकि वहां पे जो इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो कि वहाँ की स्थानिक संस्था है, जो कि वहाँ के लोकल जो रिलीजन है उसके ऊपर उन लोग का जोर है कि वहाँ का जो लोकल रिलीजन है उसको बरकरार रखना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो इसकी वजह से उनने एक पीआईएल दाखिल करी गुवाहाटी हाई कोर्ट में। और ये सितंबर 2024 में हुआ। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अरुणाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि आप लोग 6 महीने में इस एक्ट के रूल्स ड्राफ्ट करें और इसको लागू में लाएं, इम्प्लीमेंट करें इस एक्ट को। वहां के चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। उनने कहा कि हम हाई कोर्ट के डायरेक्टिव के मुताबिक हम ये एक्ट के रूल्स को हम इसके ड्राफ्ट करेंगे रूल्स, और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये भी वो कह रहे हैं कि हम कोई रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि द गवर्नमेंट हैज बीन आस्क्ड टू फ्रेम द रूल्स टू गिव सम मोर प्रोटेक्शन टू इंडिजिनस फेथ्स। पर इसका जो अपोज बहुत मतलब स्ट्रांगली कर रहा है, बहुत ही स्ट्रेंथ और जोर शोर से जो इसमें अपोज कर रहा है, वो है अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम। आपको हमने पहले ही बताया कि ये एक्ट 1978 में पास हुआ था। उसी के एक साल बाद 1979 में अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम की स्थापना हुई। और ये इसको बहुत ही कड़े शब्दों में इसकी निंदा कर रहा है। ऑपोजिशन इनका बहुत स्ट्रांग है। जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के जो प्रेसिडेंट है तार मेरी, उनने कहा कि 2018 में तो ये सीएम ने कहा था कि हम ये एक्ट को पीछे खींच लेंगे, रिपील द एक्ट करेंगे। रिपील यानी कि पीछे करेंगे, इसको वापिस खींच लेंगे। पर बोले अब 24 में कहते हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उनका कहना है कि ये जो है सरकार की दोहरी नीति है, और डेफिनेटली उसका वो काफी जोर शोर से उसका प्रोटेस्ट उनका जारी है। फेब्रुवरी में हम आपको बता दें कि अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने 8 घंटे का हंगर स्ट्राइक रखा था प्रोटेस्ट में, कि आप ये वाला अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 को लागू ना करें। और उनने बहुत भारपूर्वक ये बात कही कि आप डेफिनेटली इस एक्ट को पीछे खींचे। इसी सिलसिले में मार्च 1 तारीख को इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने एक सद्भावना पद यात्रा निकाली डोईमुख टाउन में। वो एक सपोर्ट में निकाल रहे, जो इम्प्लीमेंटेशन करना है इस एक्ट के सपोर्ट में इन लोग ने ये यात्रा निकाली। उनकी डिमांड है कि लीगल मेजर्स लेने की जरूरत है ताकि उनका कल्चर और रिलीजियस हेरिटेज को प्रोटेक्ट किया जा सके। और उनका मानना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत मतलब कोशिश कर रही है कि उनका जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, रिचुअल्स है, वो सारे के सारे बरकरार रहे, उनके ट्राइबल कल्चर वहां पे नहीं खत्म हो। आपको हम
बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ऑलरेडी 12 स्टेट्स में ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट लागू है, अलग अलग तरीकों से। वैसे तो इनको एंटी कन्वर्जन एक्ट कहते हैं, क्योंकि चाहे उनका नाम फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है, पर ज्यादातर इनका ये रोल रहा है कि ये जो कि ऑफिशियली वो फ्रॉड एंड कोजन एंड फोर्सफुल कन्वर्जन के अगेंस्ट में है, कि उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि कोई भी अनलॉफुली और जबरदस्ती और कुछ बहला फुसला के लोगों को कन्वर्ट ना करें। पर अगर आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि एक्चुअली ये एक्ट मोस्टली क्रिश्चियन समुदाय के अगेंस्ट में यूज करा जा रहा है और एक तरीके से सताया जा रहा है। इस पे बहुत डिबेट्स भी चल रही हैं कि इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम राइट्स का क्या। ये हमारे देश में छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश में लागू है। सबसे पहली बार जब ये लागू हुआ था तो उड़ीसा में लागू किया था इस एक्ट को, तब वहां पे कांग्रेस की सरकार थी। तो हर सरकार ने इस पे मतलब इस एक्ट को लागू करा है अलग अलग टाइम पे। थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश किस तरह का मतलब प्रदेश है और किस तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो जैसे हमने आपको पहले बताया, फरवरी 20 1987 को इसकी स्थापना हुई एज अ स्टेट। और 2011 के सेंसस के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश की आबादी 1 करोड़ 38 लाख से थोड़ी ऊपर है। यहाँ पे जो मेजर एथनिक ट्राइब्स, बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं यहाँ पे, उन ट्राइब्स में से कुछ ट्राइब्स जो ज्यादा यहाँ पे तादाद में पाई जाती हैं वो है मोनपा, तानी, मिशमी, ताई, नोटके आदि, यिशी, गालो, तागिन और अलग अलग ऐसी ट्राइब्स वहां पे यहाँ पे पाई जाती हैं। रिलीजन की अगर हम बात करें तो ईसाई समुदाय, क्रिश्चियन लोग हैं वहां पे 30%। हिंदुइज्म जो मानते हैं वो है 29%। दो ही पोलो जो वहाँ का लोकल रिलीजन है और लोकल यानी कि फेथ है वो है 26% के आसपास। बुद्धिस्ट लोग करीब करीब 12% है। मुस्लिम 2% है यहाँ पे। और बहुत ही कम मात्रा में सिख और जैन लोग भी रहते हैं। हमने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। पर जहां तक कि कन्वर्जन की बात की जाए तो ये नॉर्मली जो एक्ट हमने जो देखा है कि अलग अलग स्टेट्स में किस तरह से ये एक्ट लागू किया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, तो वो ज्यादातर क्रिश्चियन समुदाय के अगेंस्ट में ही यूज किया जा रहा है। इसी का डर अरुणाचल प्रदेश के जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं वो इसी का डर उनको सता रहा है। इसी बात से क्रिश्चियन समुदाय जो अरुणाचल प्रदेश के हैं वो चिंतित हैं। उन्हें यह डर है कि उनको सताया जाएगा, जबरदस्ती के उन पे केस लागू किए जाएंगे। हाल ही में फरवरी 28 को एडीएफ इंडिया ने एक पैनल डिस्कशन होल्ड किया था न्यू दिल्ली में, जहां पे डॉक्टर एस मुरलीधर, चीफ जस्टिस रिटायर्ड उड़ीसा हाई कोर्ट के जो हैं, वो चीफ स्पीकर थे इसमें। उनने ये एंटी कन्वर्जन जो लॉज हैं उनको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि दे आर वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और इट शिफ्ट्स द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन टू द अक्यूज, यानी अक्यूज को प्रूफ करना है कि उनने इसमें कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं करी, अनलॉफुल कन्वर्जन नहीं करा है। एंड ही सेज दैट subjecting private religious choices to public scrutiny। उनने कहा कि दलित महिलाएं और इंटरफेथ कपल्स खासकर इसमें ज्यादा अफेक्टेड है। उन्होंने कहा कि जबकि लीगल बैटल्स तो बहुत जरूरी हैं, बट फिर भी उनने बहुत एम्फसाइज करा कि फॉर ट्रू चेंज वी नीड टू एम्ब्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन डेली लाइफ। तो ये भी एक जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के बारे में जस्टिस मुरलीधर ने इस बारे में ये कहा था। उनने कहा था वो हमारी चॉइस को कंट्रोल करते हैं। हमने बात करी जो सेक्रेटरी जनरल हैं अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के मिस्टर जेम्स तेची तारा से। तो
सुनते हैं कि वो इस बारे में क्या कह रहे हैं, उनसे हम एक डिटेल में समझते हैं ये पूरी समस्या के बारे में। हम उनसे बात करें उसके पहले आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, इसको शेयर भी कीजिए, और हम चाहते हैं कि आप कमेंट करें, हमें पता चले कि आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चले अब हम मिस्टर जेम्स से सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वेलकम मिस्टर जेम्स टेकिटारा on our show. Yes, So thank you. Thank you. I'm very glad that we are able to talk. I'm thankful to you. आप हिंदी में भी बता सकते हैं हमें कि वहाँ की क्या परिस्थिति है इस टाइम पे। हम जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि वो वहाँ पे एंटी कन्वर्जन लॉ, जो कि 1978 में एक्चुअली पास हुआ था, जब अरुणाचल स्टेट बना भी नहीं था, तो उसकी आज क्या महत्व का, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है कि आज उसको लागू करना है इस समय। आप थोड़ा उसके बारे में बताएं हमें। आप हिंदी इंग्लिश जिसमें भी Uh, बात करना चाहें। Thank you for inviting me to into your studio. The anti-conversion law from outside you cannot understand कि ये एक anti-conversion law है. The name of the law is Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act 1978 है. When you heard it, you will say कि ये freedom है. Lekin inside the act, there is no freedom. This act was passed in 1978 with the influence of the outsider. It was passed in 1978, and the Christian community of Arunachal started opposing it. By then, Arunachal Christian has formed an organization called Arunachal Christian Forum. Since inception of that act, Arunachal Christian Forum started objecting it, and till that, there is no implementation, no rule was framed for this act. Therefore, this act was dormant for 47 years. Now, recently, government of Arunachal, they are interested to implement it by force upon the Christian community. So, with the instigation of government, some of the affiliate RSS affiliate organization, they went to High Court of Guwahati in Itanagar Permanent Bench, and they have filed a FIL to frame the rule. And the court has dismissed that PIL, saying the government had court had asked the government to tell about the status of the act, status of the framing rule. So government has reported in the court, submitted in the court in writing in an affidavit, saying that rule have been framed and it is put to the law department for scrutiny and finalization. And the Advocate General of Government of Arunachal Pradesh asked for 6 months to finalize. Then High Court said it is okay. Then if you are doing the framing the rule, the present petition PIL is not needed to be kept pending. Therefore, the PIL was closed. While closing, court had made a statement. Since you are framing the rule and asking 6 month time to complete it, so you have to mindful that your commitment that you are to complete the framing of rule by 6 months from today. That is the language that court has given.
Now government has they have started to saying court has directed us to implement the rules. Then we said no. Court has never said you implement it. You have said that we are framing the rule to implement. The court has just simply said, since you are framing the rule, finish it within 6 months, not the implementation. And the government is started where the duty bound to implement the rules. So we said you are misinterpreting the rule, the court's order. Court doesn't order you to implement, but observation was there to make the rules. So the escalation of the confrontation started from there. So Arunachal Christian has submitted several memorandum to the government of Arunachal to reconsider and not to implement the rule act. Age it was dormant for 47 years. So they denied we are duty bound to do. So we have started our democratic movement. In the first the second week of February, we started with 1 week of Arunachal Christian Forum prayer week. We have started, and on 17th February, we have set for 6 hours hunger strike. And yesterday on 6th of March, we had the protest dharna in Naharlagan. So that is the status of this. So you all have about 30% Christians in the state. According to census 2011, Okay. right, the census was due in 2021, but due to COVID, census is not published. In that, the 30% is there, but that is general population. But as a Arunachali indigenous population, the Christian population is more than 70-80%. Oh, okay. The local people. Yeah, local people is 80% of the local people are Christians. So there is one more accusation that there is the Arunachal Pradesh indigenous people that they are getting protected through this law. And what do you have to say to that? Ma'am, that group is the name of the group is Indigenous? Indigenous Faith and Culture Society of Arunachal Pradesh, and it is affiliated to RSS. So Oh. definitely they will say, They also on 1st of March they came up with a Sadbhavna Padyatra yeah, for yeah, I've seen in that. support of the Anti-Conversion Act or Freedom of Religion Act. Yeah, they said in support of that, but their entire speeches, entire commentary, entire episode, and all the speeches were on only the Christians. They read Bible in their program. They criticized Christian leaders, Christian pastors. They never demand anything to the government. They just wanted to aggregate this one, make the things stir up to create communal conflicts in Arunachal. So entirely, they never say these things to the government. They never put demand to the government to implement the act. But the entire process, you can see through the social media or electronic media, day-long speeches, slogans were against the Christian community. Now, what is the community, Christian community, they're fearing? Because as you're saying, that the indigenous people of Arunachal Pradesh are basically 70-80% of them are Christians. That's what you're saying. So, what is the fear you're having now? And yeah, tell me that. Yeah, the fear is that this act is a divisive act
because indigenous people are divided into two groups on the basis of religion. The one group, there is a religion called sun moon worship, that in local it is called Donipoloism. That group is protected under this act. Again, the Buddhism are protected under this act. Then Vaishnavism are protected. These three religious groups are protected under this act. But others like Christians, Jains, Parsis, Sikhs, Muslims, they never find the protection in this act. Therefore, we oppose it. So going forward, what do you plan to do? And what is the deadline that the government has? I mean, when are they planning to actually implement this act or come up with its rules? And what are you all planning to do going forward? The government, according to initial statement of the chief minister, he said, "I am duty bound to implement the rule by 31st of the March 2025." So when we said court doesn't give you any deadline to um, implement the law, but there is a observation of framing rule by 31st March. So government is also realizing and their mistake in making comment announcing that. So they have offered us to um, join in law process of rule making. Then we said we are not going to participate in the rule making unless act is amended or we are demanding for complete repealation of the act. So we are not going to do with this rule framing process. We are not going to. They offer us to join a committee group that is to be look after the mobilize or take the opinion feedback of the rule framing. Age of now, government has offered this one, and we deny that will not speak to the rule unless act is discussed. That is our stand. Then we had decided to move democratically. Our first page of democratic movement ended yesterday, and let us see what government next does. Then only we'll bail out our second page of democratic movement. As of now, we are just keep mum on our second page of movement. Okay, so in your state assembly, out of the 60 MLAs, 46 are actually BJP MLAs. When you said that 60-70% are Christians, but it's not, they're all voting for BJP. So when you have such a high majority of BJP MLAs, how do you think you'll be able to stop this act from coming into, for the rules to be framed and for it to be implemented? See, ma'am, MLAs, most of the MLAs, even they are in BJP, they are against this act. If required, they will be. They are talking to the government also, and they and the even 19 of the MLAs are Christians in present legislative assembly. So they are with us. Even non-Christian MLAs, they see this act is divisive act, and this act may lead to the law and order situation that is being created in Manipur. So they have a fear on that, and those people who love the Arunachal Pradesh, they are opposed. They are against this Freedom of Religion Act.
Therefore, amendment, even if it's required, they will be with us. So, are you speaking to the CM, Mr. Pema Khandu? Several times before this FESCO started, it is a 47 year of our struggle to repeal it. We have spoken to him many times. We have submitted memorandums also, and we have submitted the ultimatum to him personally before 2024 election also. We have demanded him to repeal the act, or otherwise will Christian community will vote against them. Okay, then since you said that you are having this fear like Manipur, you know how things have escalated there, how there's been violence right now, it's not even resolved after now almost a year and a half actually. So Mm. that is what they call ethnic clash. But here, this is more like a religious thing. That is a little different. Are you still fearing Manipur like kind of violence? No, ma'am. That the Manipur situation is not. I cannot say it is a ethnic violence. That is combination of religious and ethnic, and that was the seed was sown. Hatred of the seed was sown in 200 years ago in Manipur. So now the wheat seed sown by those people are bearing fruits now. So today, this government is trying to sow this divisive seeds in Arunachal Pradesh. Therefore, with the experience of Manipur situation, we are against it. This is not completely a religious discussion. It is more of a ethnic. I told you, under this act, indigenous tribal are divided into two groups in the line of religion. So, suppose in a same house there are Hindu, there are Donipoloism or Christian living together. If this difference of division is started, even family will have a chaos on this line. So it is more danger than the Manipur situation. The Manipur, there is a clear-cut ethnic division is there, Meitei and Kuki. But in Arunachal, no clear-cut division is there. There are many Christians and non-Christian tribal, within a tribe group. Say I am a Nishi, our 90% of the Nishi tribe in Arunachal is a Christian and rest are non-Christian. Suppose if we started fighting among ourselves on line of religion, there is chances of bloodshed. So we don't want that to happen. Okay. So are you planning any more, protest and all? Because 31st is just a few days from now. Just you have 22, 23 days. We'll see if government really implement this act by 31st of this month. Their action will speak. Then we'll see. Okay. Is the public also fearful? Arunachal Christian Forum is fearful. What about others? Meaning those who are Buddhists, those who are they have their own indigenous religion or faith. Are they also fearful? Yes, yes. Except few misguided or spoon-feeded from Nagpur, rest are fearful of it. Okay. Is there anything else you'd like to add? Yeah, my appeal is to the government that they should not provoke the Christian community by implementing the law by force on innocent people, peace-loving people in this particular state. So my appeal will be there, and another my appeal will be
there are some group who wanted act to be implemented, law to be implemented. It is their prerogative, it is their democratic right to demand from their government, but they should not abuse, or they should not accuse the Christian community or Arunachal Christian Forum. Personally, also, many are taking my name, my president's name, and some senior Christian leaders' name that they are accusing us. So it is our appeal. They should not take the matter into up to the family or the individual level. That may aggravate this present situation. So that much I want to appeal. Okay, so your president is also very active in protesting in this whole thing. You'll have a lot of women who have also, I've seen them in the rallies, who are there active and they're coming and are participating in the rallies. So you all have a lot of popular support. Do you also have support from other groups who are not Christians, like Buddhist and others? Are you having their support? We are not getting any religious group support, but the social organization, student union, their support we are getting. Like our All Arunachal Law Student Union, they extended their support to us. They have written to the government to not to implement this law. There is a FX student organization, the All Arunachal Pradesh Student Union. They have also spoken to the government that situation should not be aggravated, and uh, other powerful state, the community-based organization, student organization, that is all Nishi Student Union called ANSU. They have also spoken to the government not to aggravate this situation. They should not implement this act. We have other social, even social activists. Yesterday, the in Darna, social activists also joined. They have also spoken against the act. So we are getting support from every corner. Very good, very good. So, on that very happy or rather hopeful note, I would like to end and I would like to thank you for being with us, talking to us, taking time out from your schedule to speak to us. I really want to thank you. Thank you. Thank you. तो आपने देखा कि किस तरह से मिस्टर तारा ने बताया आपको कि किस तरह से जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम चिंतित है और वो इस ये डर उनको सता रहा है कि कैसे ये एक्ट की आड़ में उनको सताया जा सकता है, हैरेस किया जा सकता है। तो वो पूरी जोर शोर से इसका अपोज कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? डेफिनेटली आप कमेंट करके हमें बताएं। आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।